Coulomb's law of electrostatic is similar to Newton's law of gravitation. Force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଛି Q1, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି Q2, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା R, फोर्स है एफ ए फोर्सटा केते हबो ना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एफ प्रोपोर्शनल टू q1 q2 and f proportional to 1 by r square inversely proportional to square of the distance ए दुटा कंबाइन कर देले f proportional to q1 q2 by r square f is equal to beta q1 q2 by r square ए बीटा टा होची f is equal to beta q1 q2 by r square ताले ए q1 q2 by r square a beta टा होची constant of proportionality which depends upon nature of the medium and a system of unit ए बीटा टा डिपेंड करिबो ए जो दीटा चार्ज अछि ता भितरे कोन अछि आ भितरे वाटर अछि कि एयर अछि कि वुड अछि कि आयरन अछि कि ग्लास अछि से मीडियम ऊपर फोर्स टा बदल जिवो कारण बीटार मूल्य अलग अलग आउ यूनिट अनुसार भी बीटा टा चेंज हबो इन एसआई यूनिट and for medium beta is equal to 1 by 4 pi epsilon एटा पहले एटा पढ़िबो epsilon टा कोन ना epsilon is the permittivity of the medium so f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square हला एटा मीडियम पाई तापरे पहले हमें जदी फ्री स्पेस पाई का नबा for a free space epsilon is equal to epsilon naught है permittivity of free space epsilon naught value 8.85 10 to the minus 12 coulomb square per newton meter square so beta is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 into 3.14 8.85 10 to the minus 12 एटा पहले गोटे राउंड फिगर पळे आसीबो 9 into 10 by 9 newton meter square per coulomb square so f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square अच्छा तापरे in cgs रे सेन for medium beta is equal to 1 by k k is the dielectric constant of the medium ताले f is equal to 1 by k q1 q2 by r square आउ पिले जदी एटा फ्री स्पेस पई हबो ना फ्री स्पेस रे k is equal to 1 f is equal to q1 q2 by r square eta 1 f is equal to q1 q2 by r square ताहले तमरा कूलम्ब्स फोर्स एटा गोटे स्ट्रांग फोर्स किंतु ग्रेविटेशनल फोर्स टा एटा होची गोटे वीक फोर्स तेनु कूलम्ब्स फोर्स it is a very strong force coulomb's force depends upon nature of the medium between the two charges coulomb's force is both attractive and repulsive तो तमे जदी देखिबो दीटांक चार्ज माने कर एटा गोटे प्लस q चार्ज एटा गोटे प्लस q चार्ज हला ताले द टू चार्जेस विल रिपेल इच अदर जदी माइनस भी चार्ज हला रिपेल करिवो किंतु जदी गोटे प्लस आ गोटे माइनस ताले ए दीटा चार्ज रहिले दे विल अट्रैक्ट इच अदर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर सेम चार्ज repel each other positive repel negative repel positive attract but negative positive attract opposite charge ताले तापरे हम देखिबा पिले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म धर एठी गोटे चार्ज अछि ए चार्ज टा होची q1 एठी गोटे चार्ज अछि ए चार्ज टा होची q2 ताले if q1 into q2
is greater than 0, Q1 Q2 into करिबो जदि 0 रु बड़ ହେଲା ताले कोन हबो ना जदि एटा बड़ केते हबो ना दीटांग जदि पॉजिटिव ହେଲା ताले 0 ठाରୁ बड़ हबो दीटांग नेगेटिव हेले भी 0 ठाରୁ बड़ हबो दीटांग पॉजिटिव हेले नेचर ऑफ द फोर्स ହେଲା रिपल्सिव आ दीटांग जदि नेगेटिव ହେଲା नेचर ऑफ द फोर्स रिपल्सिव किंतु पॉजिटिव नेगेटिव एटा ता पेगा नो एटा दीटांग पॉजिटिव बा दीटांग नेगेटिव पाई ताले ए फोर्स टा होची रिपल्सिव तर एठी बर्तन कोन हबो ना ए Q2 टा Q1 को रिपेल करिवो एटा भी आकु रिपेल करिवो ताले एटा फोर्स टा होची F12 force exerted on charge Q1 due to Q2 एटा हबो F21 force exerted on charge Q2 due to Q1 अच्छा ताले F is equal to beta Q1 Q2 by R square ये जो फॉर्मूला टा दिस इज द स्केलर फॉर्म माने ओनली मैग्नीट्यूड किंतु F12 एटा होची वेक्टर ताले F12 is equal to beta Q1 Q2 by R square एटा हला स्केलर डायरेक्शन कोन हबो ना हमें Q2 रु Q1 आडू को जो वेक्टर जॉइन करिबा सेटा Q2 रु Q1 आडू को तार डायरेक्शन तेणु ए डायरेक्शन रे यूनिट वेक्टर R21 एटा जेतु यूनिट वेक्टर तार मैग्नीट्यूड 1 एटा किछि मैग्नीट्यूड को अफेक्ट कला नाही एक्स्ट्रा लाभ हैला कोन ना एटा डायरेक्शन भी देला तेणु 2 रु 1 ए जो हमर R21 कैप जेमति हम आगरु लिखुतले कोन ना ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सेमिति R21 कैप इज इक्वल R21 वेक्टर बाय R21 रो मैग्नीट्यूड इटा हम पुट कर देले बीटा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 वेक्टर बाय R ताले इटा हेगला सिंपलीफाई कर देले F12 is equal to beta Q1 Q2 by RQ into RT1 similarly ये जो फोर्स F21 force exerted on charge Q2 due to Q1 F21 is equal to beta Q1 Q2 by R square R12 cap F21 is equal to beta Q1 Q2 by R square into R12 एटा है जिवो R12 वेक्टर बाय R तेणु एटा 12 थिला एटा 12 ताले F21 is equal to एटा हबो 12 R12 बीटा Q1 ना ना एटा ठीक एटा है गेला F beta Q1 Q2 by RQ R12 वेक्टर एटा हला F21 देखो F21 F12 खाली चेंज हबो कोन ना एटा R21 अछि एटा R12 हबो तो माइनस कर देले बीटा Q1 Q2 by R square R21 वेक्टर ताले F21 is equal to minus F12 that is the two forces are equal in magnitude but opposite in direction हला two forces are equal in magnitude opposite in direction आउ तमर जदी केस 2 हला जदी गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव हला ताले ये कोन करबो ताको अट्रैक्शन करबो एटा ताको अट्रैक्शन करे सेठी जहा थिला एटा शेयर होइबो खाली F12 beta Q1 Q2 by R square into R12 beta Q1 Q2 by RQ into R12 F12 हला beta Q1 Q2 by RQ R12 हला ताहले F21 टा हे जिवो minus beta Q1 Q2 by RQ into R12 F21 is equal to minus ए केस रे बी ए जो दीटा फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन चार्ज इज कूलम in SI and start coulomb in CGS in CGS there are two units
गोटे है ESU electrostatic unit. In electrostatic unit, the unit charge is start coulomb, and in EMU electromagnetic unit charge is half coulomb. Now we shall discuss the definition of coulomb. We know, consider the force of attraction. You consider 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance r apart. If r is equal to 1 meter, r is equal to 1 meter, Q1 is equal to Q2 is equal to Q. F is equal to 9 into 10 to the power 9. F is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton. Then from Coulomb's law, we know F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. তাহলে F ର value ହେଲା 9 into 10 to the power 9, 1 by 4 pi epsilon naught ର value 9 into 10 to the power 9, Q1 is equal to Q, Q2 is equal to Q, R is equal to 1. So, Q square is equal to 1 or Q is equal to plus or minus 1. So, the definition of Coulomb is, the charge is said to be 1 Coulomb if it is situated at a distance of 1 meter apart in free space from equal charge exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. ताहले एई जो बॉडी रा एठी मन कर हमें 1 कूलम चार्ज अछि बेले केम जानिबा ना जदि से आउ गोटे 1 कूलम चार्ज ठारू 1 मीटर डिस्टेंस रे रहिबो एवं तांको भितरे जदि 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स पड़िबो then the charge will be 1 coulomb. एटा होची हमर indirect definition of charge. Next we shall define start coulomb. Similarly, you consider 2 point charges QQ. QQ separated by a distance 1 centimeter apart. Suppose the force between the two charges is 1 dyne. F is equal to 1 dyne. F is equal to 1 dyne. F is equal to 1 dyne, R is equal to 1 centimeter, Q1 is equal to Q2 is equal to Q. In CGS, the force expression force in free space F is equal to Q1 Q2 by r square. F ला 1 dyne, Q1 ला Q1 Q2, एटा Q ताले Q square is equal to एटा वो Q into Q by 1 रो square. So Q square is equal to 1, Q is equal to plus or minus 1. Charge of a body is said to be 1 start coulomb if it is situated at a distance of 1 centimeter apart in free space exert a force of 1 dyne. तेणु एठी हमर चार्जटा केतेबेले कहिबा जे 1 स्टार्ट कूलम चार्ज अछि जदि आउ गोटे सिमिलर चार्ज थारु 1 सेंटीमीटर अपार्ट रे रहउतिबो एवं 1 डाइन फोर्स पडुतिबो ताले निश्चित भाबरे एठी चार्ज होउची 1 स्टार्ट कूलम. In EMU electromagnetic unit, in EMU unit charge is 1 half coulomb. Unit charge is 1 half coulomb. ताले electromagnetic unit भी CGS, electrostatic unit भी CGS. Electrostatic unit रे unit charge है 1 start coulomb और एथर होची 1 half coulomb. ताले now we shall establish the relationship between coulomb and start coulomb.
suppose the two charges are separated by a distance, two charges, 1 coulomb each, ଏଠି ବି 1 coulomb, ଏଠି ବି 1 coulomb, ଏଠି distance ରହିଲା 1 meter. ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ କୁଲମ୍ କେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୁଲମ୍। 1 coulomb 1 coulomb ରହିଲା ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ, ଏମାନେ 1 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କୁଲମ୍ସ ଲ in free space F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ताले 1 by 4 pi epsilon 9 into 10 to the power 9 Q1 1 coulomb, এটা भी 1 coulomb, এটা भी 1 ର স্কয়ার। তাহলে এটা হলা 9 into 10 to the power 9 নিউটন। তাহলে F is equal to 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 1 newton होची 10 to the power 5 डाइन। ताले 9 into 10 to the power 9 newton है जो 9 into 10 to the power 14 डाइन। अच्छा, आमे एई सिस्टम टाकू सीजीएस यूनिट रे आमे एटा नबा। ताले हमर सीजीएस यूनिट रे एटा 1 मीटर टा आटा जो 1 मीटर अछि आमे सेटा को नै जिबा 100 सेंटीमीटर। 1 कूलम टा आमे केते जानिनी स्टार्ट कूलम, तेनु 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टार्ट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टार्ट कूलम। ताले हमर सीजीएस यूनिट रा फोर्स हला F इज इक्वल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। ताले x into x by r ताला 100 रो स्क्वायर। ताले F is equal to x square by 10 to the power 4 डाइन। हमर किंतु आ पूर्व आमे जोटा करथले एसआई यूनिट रे बाहर करी सीजीएस रे करथले F थाला 9 into 10 to the power 14 डाइन। अच्छा, आमे एसआई यूनिट रे बाहर करी सीजीएस को कन्वर्ट करथले फोर्स टा। एबे बाहर कले सीजीएस रा फार्मूला पके F is equal to x square by 10 to the power 4 डाइन। ताले ए दुईटा का सेम वैल्यू। ताले ए दुईटा इक्वेट कर देले x square by 10 to the power 4 is equal to 9 into 10 to the power 14। ताले x square is equal to 9 into 10 to the power 18, x is equal to root over of 9 into 10 to the power 18। ताले x is equal to 9 root over 3, 10 to the power 18 root over 10 to the power 9। ताले x is equal to 3 into 10 to the power 9। So 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb। ताले 1 coulomb is equal to 1 coulomb is equal to 1 by 10 half coulomb। 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb। ताले ए दुटा को जदी इक्वेट कर दबा 1 by 10 half coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb। ताले 1 half coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb। अच्छा, this is the relationship between the different units of force। Next, consider a numerical. Suppose two charges 20 microcoulomb minus 10 microcoulomb are separated by a distance 20 centimeter apart in free space. We have to calculate the force of attraction। it opposite charge रहिला force of attraction। एठी गोटे चार्ज अछि, एटा होची 20 microcoulomb, एठी गोटे चार्ज अछि minus 10 microcoulomb। ताले आंक भितर डिस्टेंस हला 25 सेंटीमीटर। देख पिले आमे जोटा यूनिट टा नेले चार्ज रो कुलम सीजीएस रे स्टार्ट कुलम नहले आप कुलम, किंतु एठी माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम टा एसआई यूनिट नो, कुलम टा होची एसआई यूनिट। किंतु हमर 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कुलम। तेणु फास्ट Q1 इज इक्वल टू 20 microcoulomb is equal to 20 into 10 to the power -6 coulomb is equal to 2 into 10 to the power -5 coulomb। एटा हला Q1। तापरे Q2 is equal to हमें साइन टा एथरे नबा नाही, केवल मैग्नीट्यूड टा नबा, मॉड्यूलस टा तार नबा। तो 10 microcoulomb is equal to 10 into 10 to the power -6 हेले 10 to the power -5 coulomb। Q1 Q2
आर टा जो देइछि तमर 25 सेंटीमीटर एटा भी सीजीएस तो 25 डिवाइड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 1/4 मीटर एटा हला आर ताले एफ इज इक्वल टू केता हबो ना एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर ताले एटा हबो 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 into q1 हला 10 to 2 into 10 to the power minus 5 q2 हला 10 to the power minus 5 distance हला 1/4 रो स्क्वायर ताले 1/4 रो स्क्वायर हे जिवो 1/16 ऊपर को पळेबो ताले एटा सिंप्लीफाई करले 9 into 2 into 16 into एटा हला 10 to the power 9 एटा minus 10 10 to the power minus 1 ताले एटा हला एति की न्यूटन ताको एटा सिंप्लीफाई कर दबो 9 into 32 into 10 to the power minus 1 न्यूटन मल्टीप्लाई कर ले एटा 8 28 ताले एटा डेसिमल गोटे 28.8 न्यूटन ताले नेक्स्ट two identical and equally charged spheres separated by distance r apart exert a force F. Another sphere which is uncharged but identical to both the sphere are kept in contact with the first sphere and then with the second and finally removed. Calculate the force between them. अच्छा एठी पिला हमें देखिबा गोटे न्यूमेरिकल अछि एटा गोटे स्फीयर आर चार्ज हला q एठी आ गोटे स्फीयर तार चार्ज मध्य q ए दुटा एका साइज एका नेचर ऑफ द मटेरियल एका चार्ज आंक भीतर डिस्टेंस हला r अच्छा तापरे एटा स्फीयर धरो a ए स्फीयर हला b आमे बर्तन कोन करिबा ए दुटा भीतर फोर्स पडुची f ताले f इज इक्वल टू केते ना f इज इक्वल टू बीटा q स्क्वायर बाय r स्क्वायर अच्छा आमे कोन करिबा बर्तन आउ गोटे स्फीयर नबा से होचे आइडेंटिकल टू a एंड b ताले एठी फास्ट a सहित कांटेक्ट रे में रखिबा एटा a थिला r चार्ज q थिला एटा c आकु लगे की रखिबा एथ्रु चार्ज ट्रांसफर होबो कंडक्शन रे तेनु एटा जेहेतु आइडेंटिकल साइज अछि तेनु चार्ज विल डिवाइड एटा रहइबो q/2 एटा भी q/2 तापरे a ठू आमे c को रिमूव कर दबा तापरे नै जिबा b पाखको ताल एटा नै गला परे b पाखको बर्तन एटा इठ रहिला पुनी c टा को b सहित लगे रखिबा एटे b सहित लगे रखिले r चार्ज थिला q r चार्ज थिला q/2 एटा c रो एटा हला a रो ताहले एठुरु चार्ज पुनी आधे को ट्रांसफर हो केते चार्ज जीवो ना टोटल चार्ज रा हाफ त टोटल चार्ज केते हला ना q प्लस q/2 त तार हाफ माने बाय 2 तले एटा केते हे जीवो ना 3q/2 बाय 2 हेले 3q/4 ताले फाइनली आमे वर्तन कोन करिया ना c टा को रिमूव कर दबा ताले a रो रहि गला q/2 b रो भी रहिला q 3q/4 एटा रहिला 3q/4 c टा 3q/4 चार्ज नै पळेला बर्तन a रो चार्ज रहिला
ए रो चार्ज रहिला q/2 एटा रहिला 3q/4 डिस्टेंस ए r ताले एठी कोन हबो ना f डैश इज इक्वल टू बीटा q/2 into 3q/4 divided by r square ताले f डैश इज इक्वल टू बीटा 3/8 q square by r square q square by r square f dash is equal to 3/8 beta q square by r square है f 3/8 है f. Now the force between the two charge body A and B will be reduced to 3/8 of the original force. जति की force थिला तार 8 भाग रु 3 भाग बर्तन